So today we'll be learning about malware analysis and why is it important in the SOC environment or in the SOC infrastructure. So we have gone through the steps almost in every section, but in this session we'll make it uh, very specified to malware analysis, and we will do a challenge that I posted earlier in the group. And also, do not download the file that is the subjective file of the challenge. Do not download it on your PC. You can have a VMware or um, a separate Windows machine which does not include your personal data or sensitive data. Yes. So there are two types of malware analysis. Uh, the first one is static, and the other one is dynamic. So we have gone through the static steps as well, and we did the dynamic ones as well. इसमें major difference is we rely on the information that is available to the, let's say, the feed or to the database of malware on the open internet. And we also base our investigation of static malware analysis investigation against the reputation of the IP address, reputation of the whatever signature that one asset has. So if we have an IP that starts from this, so if we are checking the IP, if we're checking the IP reputation or health, it means we are doing static analysis. Let's say that we have a hash SHA-256. I've showed you uh, how to get the file, the one file SHA-2 command prompt. I'll show you again. Just a second. So anyone remembers that command? What did we use? What command did we use? Let's pick this file and .sba. So then we need to give अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट। जी पूछे पूछे। एक क्वेश्चन ये था कि लास्ट टाइम भी मैंने फिर जो एनालाइज कर रहा था इसका मालवेयर वाला आपने लेक्चर रेट में कराई है, तो वो देख रहा था तो उसमें स्ट्रैटेजी मोस्टली की है, बाकी डायनामिक कुछ भी रन करके नहीं देखा हुआ। तो तुम लोगों ने स्टैटिक करके देखा हुआ है?
जी जी, स्टैटिक करके देखा था जो आपने लेक्चर 8 में करवाया हो, सॉरी 7 में। हाँ, लेक्चर हम 8 लोगों में ने तो आपने रिपीट स्टैटिक करा। करके देखा, डायनेमिक नहीं करके देखा, राइट? जी जी सर, डायनामिक नहीं किया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन करना था कि सर जो वी एम एम की फाइल है, क्या सर इसको इस तरह से लोड करने पे कोई ये मेमोरी में एग्जीक्यूट होती है, या जस्ट ये डमी टेक्स्ट ही होता है और कुछ नहीं होता लोड करने अब पे डायनामिक का सिस्टम पूछ रहे हो, में? right? आपका वो गूंज रही है, मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही है इतनी। अब बोले, आप डायनामिक का पूछ रहे हो, राइट? जी जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर उसको लोड करते हैं तो कोई मेमोरी में जिस सिस्टम पे करें उस पे इफेक्ट हो सकता है या नहीं, या करना ही नहीं चाहिए, किसी और सिस्टम में कैसे इस करनी चाहिए तो वैसे? डिपेंड करता है ना, डायनामिक बिकॉज इट्स सेंसिटिव, राइट? लाइक यू आर जी, यूजिंग अ malware दैट सेंसिटिव टू द पीसी, तो हम लोग कैसे करेंगे? दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? ठीक ठीक है, तो सर इसको डायरेक्टली इसमें लोड ना करो, ना टच करें। तो हम लोग हमारे पास जो है ना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज ए an environment that's called sandbox. That environment does not have any sensitive file, and it's not on production server, and it includes some specific tools that analyze the malware. So what they do is they execute the malware itself and see what behavior it occurs, where are they connecting, and what kind of files that is producing, what kind of tasks that is created, and if there any registry changes are happening or not. So I guess I have showed you, like in maybe not in the previous session, but in last sessions I have showed you the any run platform. वहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था। बिल्कुल सर, वहाँ वो मैंने देखा था, आपने एग्जीक्यूट करके दिखाया था। मैं जैसे ये पूछना चाह रहा था, वहाँ पर आपने ओपन करने पर जिससे वो शो कर रहा था बहुत सारे बैनर और ये सारा जो उसका होता है इनक्रिप्ट कर लेता है और उसके बाद वो शो करता है, जैसे वाना क्राई था मालवेयर और रैंसमवेयर का। तो सर वो पूछना ये चाह रहा था, जैसे कमांड लाइन एग्जीक्यूशन है और उसमें जैसे उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे थे कि किस तरह का है, क्या है लैब सॉल्व करने के लिए। तो सर क्या पूछना ये चाह रहा था, गलती से भी कोई कमांड रन होने पे ये एग्जीक्यूट भी हो सकता है उस सिस्टम पर? एहतियात करनी चाहिए, नहीं रन करना चाहिए, या नहीं कुछ हाँ, होगा? उसको प्रोडक्शन पे तो कभी रन ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन पे क्या पता कोई ऐसी कमांड लाइन रन हो जाए विदाउट योर नॉलेज, और वो बैक एंड पे कुछ ऐसे फिर बैक अपना बैकडोर क्रिएट कर दे, और वो जो है फिर कनेक्ट होता है और आपके पीछे पे मालवेयर आ जाए। कमांड लाइंस हमेशा जो है ना, एग्जैक्ट प्रोसेस पे चली जाती है। सो लेट्स से कि अगर ये OR4 जो भी .exe है, तो इसका भी एक कमांड लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, राइट? ऐसे ही है सर। ठीक है, देखो ये कमांड लाइन है उसकी। बिल्कुल सर। सर ये जस्ट पूछना ये चाह रहा था कि वो जैसे वो बी एम ई एम की जो फाइल है, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट होके सारा कुछ एग्जीक्यूट होता भी है, या जस्ट वो डमी है आपके पास जितना? टूल जगह पे होते हैं, या तो फिर देखो डिजिटल फॉरेंसिक्स जब करते हो ना कि मालवेयर अपना मालवेयर एनालिसिस करना है, जी जी। सॉरी डिजिटल फॉरेंसिक्स करना है, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आपके पास कमांड भी आ जाए, जैसे हमने वोलेटिलिटी ये वाले इसमें किया था, है ना, हमारे जी जी, कमांड किया था। ऐसे लेकिन ही अगर सर। हम लोग मालवेयर एनालिसिस कर रहे हैं, तो मालवेयर एनालिसिस में प्रोसेस हैकर के नाम से एक टूल है। तो दे आर डिफरेंट टूल्स जो कि आपको एग्जीक्यूशन के टाइम पे बताते हैं कि ये कमांड्स भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो थैंक यू। हमारे पास जो है एक कमांड लाइन बहुत जरूरी है हमारे लिए। सही है सर, थैंक यू सो मच। कमांड लाइन से क्योंकि हमें पता चल जाता है कि प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है और कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या बात है उसका। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे कि देखो ये टेम्प फोल्डर से एग्जीक्यूट हो रहा है, टेम्प फोल्डर से एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आप पीछे देखो तो एडमिन का टेम्प फोल्डर है। ठीक है। तो इसलिए जो है हमारे पास कमांड लाइन बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने स्टैटिक एनालिसिस, वी डिड स्टैटिक एनालिसिस इन द प्रीवियस सेशन एंड वी आर डूइंग इट अगेन। तो थोड़ा सा रिकैप हो जाए तो I was taking one file and doing the analysis .txt. So let's do start util and do hash file, and then sha 256. Okay, so
Now you got the hash. What you have to do is you take the hash to you take the hash to the tools that we have, the open source tools that we have online, or we can also have our own built-in tool like हमारे पास कुछ solutions होते हैं endpoint के कुछ solutions होते हैं where we can check the malicious hacks if they exist in their database. Okay, so this file does not have any information against it. Why it does not have any information? Because no one ever submitted this file. And if we face such stuff, what we have to do if the information is not sensitive, what we have to do is we have to upload the file. Now, let me show you if we upload the file, what happens. Remember what this is. Okay, so let me upload this file and show you what happens when we upload a file that does not have any ratings and what does the virus total do. Now he's doing dynamic analysis as well, and now he did the analysis. Okay. Why it didn't have any rating before? Because this file never ever was submitted to the public reputation tools or public health tools. Okay, so if you face such thing, you have to upload the file if the data of the subjected file is not sensitive. If it's sensitive, then it's better to do the dynamic analysis. And also dynamic analysis, if you're doing dynamic, let's say that I'm doing a new analysis. Probably gonna send ID. Email gonna work. Mm, so the address is not correct actually. We have to sign up with another email. The domain is not allowed, so it's blocking the emails that. Okay, let's change this.
we are unable to do that. Let me just give me a minute. Let me kind of something else. Just a minute. Okay. So I'm sharing my screen again. Okay, now we can submit an email, an entire email, okay, and we can submit an entire file. We can submit a URL. What it does is, let's say that we have this URL, or we can say phishing URL. Okay, let's say that we have this URL. Now let's submit the URL. And because this is not a paid version, we cannot select anything else. You see, we have a promo, but promo requires see, it does not have, so we cannot apply all the options here. But anyway, let's let's do this. Let's run this, and it says that this will be submitted online, but that's not a problem. So you see, it will take you to the actual URL. So that is dynamic analysis. Now, if we interact with the website, and let's say if this website will let me enter some credentials, then I will know that what processes this is dropping and where it's being connected. This is an example of a URL. What about a file? Let's say that um, so we have to upload a file. Let's say that we have a file. So, let's do this. Let's run the public analysis. So this is doing dynamic analysis. What can we do after that is so because this is just a text file, it's not connecting to anything, right? But if this is a malicious file, what it will do, uh, it will connect to some it will connect to some malicious domains. Okay, let's do one thing. Let's do one thing. I have an idea. Let's go to the Linux machine. Let me pick this up and let me download the file here. This file. Let me download this file and let's go to anyone and upload this file and see what will happen. This file will give us a lot of answers. Okay?
So, okay, so it's not different, not different. And this one. Okay, so this file includes real malware. Please be careful when interacting with it. It strongly suggests players create a dirty virtual machine to analyze malicious files. So if you're using your own machine, do not download this file. Just stay with me until you get the opportunity to have your own virtual machine or sort of thing. Okay? Once this is downloaded, extract, download extract here, everything as a password. Password, ETLO. What is that statement? So that's a text file that has some code. That is a that's a malware. Mm, um, here's the basic. Okay, so we have to analyze this file. This file does contain some things, but I didn't want this file. Because that's a bash file. We can upload this file. Wait, let me upload this file. Give me a minute. I'm just entering the credentials and then I'll share my screen. Give me a minute. We can do this the physical one later after we finish this because um, tactical is always exciting, right? मजा आता है उसमें ज़्यादा rather than कि हम theoretical से शुरू करें. Okay, I'm sharing my screen again. So let's submit that file. Let's submit that file. Let's see, because that's just txt, but that's actually a bash file.
But time खत्म हो जाता है, so you guys can increase the time. So it's a text file. It's a text file. It drops some malware. This guy has a Docker machine and also take all the authorized keys into a file. See, and it has this extension. Using a system file done delete file. You get home files done delete file. Every home file is set to a little bit of uh, a little bit of programming knowledge is helpful here. So I wanted to upload a real malware here, and that's giving me that's giving me this malware sample. Let's try it. Malware sample. Okay, it's really it's here. Is that is the malware? And can I download this? Can I download sample? Let's download infected with the password. Let this file and let's insert it here. Here is tested. Okay, now we have let's upload this. Let's upload yes, this is another this line.exe. Features changes the auto run value in your one. Changes the auto run value in the registry. It's doing its work, right? And if you see the connections, probably connections are malicious as well.
See, client is connecting to 109.123.235.88. So, network stack, unknown traffic. You see, there's unknown traffic that's going on, and see how many HTTP requests we have. That has been detected by Yara rule. It is 100% malicious. Okay. So yeah, so let's stop this. So that says malicious activity. And one thing, um, one thing about the malware, it does dump a lot of processes, but here it didn't do that. You see, so it has one process that is doing everything almost. You see, it reads the security settings of the Internet Explorer. It reads the computer name and checks the supported language. So, um, so when you click on the result, it will show us IOCs as well. It says only two launching a file from registry key. So what does that mean? What does that mean? Now this system has a so this process a added a client.exe through a registry file, right? So the one has a malware configuration, it's a known threat, processor added to the startup, analysis contains several apps running. You see, these are all the IOC that is linked to. So these, so some of the domains are not malicious here, but if you check these, this is malicious, this is malicious. So this is connected to the this is connected to the actual hackers or adversaries domain name or C2 server. Um, you see, the server is malicious. 17 versions have already detected that, and was Wisconsin, and I think it's still the EELF detects encrypted in ST-A54. So this was a suspicious and malicious attack. Let's go back. Let's go back. Let's go back. Tamazani. See, a DLL file can also be malicious. Okay. 8 vendor detection. And okay, one more thing. Here we have IUCs as well. If you guys are looking for, let's say, do further hunting, to try to enter, what you can do is you can go to the IUCs here and search upon them. Okay, we do this last one and then it's another sample. Infected is the password. सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वैसे कोई है नहीं और अलमाज पाकिस्तानी है सब, तो सर अगर पॉसिबल हो सके उर्दू में क्या आप लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं उर्दू? उर्दू में लेक्चर की बात कर रहे हो? जी जी सर, असल में ना आपकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा बैक पे नॉइज भी है, तो समझने में इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी अगर नॉइस आ रही है? पॉसिबल जी अभी क्लियर है, लेकिन अभी उर्दू में तो आपको पता है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डीपली है, तो वो इसलिए समझ आ जाती है, लेकिन नॉइज थी जिसकी वजह से वो इंग्लिश में भी समझ अच्छा, नहीं आप पा रहे लोग अभी। तो अगर अब कैप्शन जो है आप ना, लोग कैप्शन ऑन करो यार। अब आप लोग बताओ, इट्स बेटर नाउ? जी जी ये थे पंखा का शोरूम है। जी सर। ओके,
इट्स बेटर ना, वो कह रहा है ना कि समझ नहीं आती ना आपकी आवाज की, तो मेरी तो यही सजेशन है, कैप्शन ऑन कर ले अपनी तरफ से, तो थोड़ी बोलिए ना, समझ आ जाएगी आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ, इट्स बेटर नाउ राइट? आप लोग कोई जी पार्ट, जी सर, एक क्लियर पार्ट है। मुझे बताओ कहीं पे कुछ समझ ना आया हो इस एनालिसिस के दौरान। सर यहाँ कुछ चीज़ें थी, जैसे अभी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, कुछ बीच में मिस हो गई थी अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन खैर आप कर लें, बाकी मैं वो साथ में मैनेज कर लूंगा, आप कंटिन्यू रखें लेक्चर। अच्छा ठीक है, मुझे ना कोई सवाल हो ना मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? जी जी सर, इंशाल्लाह। मैं बाकी जो है फर्दर आई एम गोना डू द सेम प्रोसेस। सो यहाँ पर तो हम लोग मालवेयर बाजार से ले रहे हैं, राइट? बट in real life, when you guys receive a process or a file, an executable file, you will have an executable file which you can then down upload on anyone and execute. But since I do not have any malicious file, that's why I'm taking it from the malware bazaar. Okay. And also, not all files to be uploaded on open source sandbox. So this is open source sandbox. You can go, you guys can go to Threat Intel, I believe, and you guys can see the samples that are already submitted. ठीक है? Let me go back here. मैं साथ में डिलीट करना चाहता हूँ। हम लोग चैलेंज करेंगे। एक फाइल कर लेते हैं, अगर उससे मुझे जो एक्चुअल जो आप लोगों को चीज समझाने का वो समझ में आ जाती, देन विल मूव ऑन टू द चैलेंज। एंड आफ्टर दैट थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल समझ लेना। और थ्योरेटिकल तो चलो आप लोग सर्च करके भी पढ़ सकते हो, बट मैं आप लोग को एक कॉम्प्रहेंसिव समझा दूंगा मालवेयर एनालिसिस एंड जो उसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं हमें उसको कैसे समझना है, ठीक है? ओके, तो ये है मालवेयर, ठीक है? एक और मालवेयर आया है, लेट्स अपलोड दिस। Let's upload this to anyone and see the behavior of this file. Okay, that file is big file. ठीक है, ये है 32 megabytes. I cannot upload this file because that has a limit. अगर ये paid version होता तो probably I would be able to upload the file. कोई बात नहीं, we can यहाँ पे हमें वो नहीं बताता। Wait, हमें यहाँ पे साइज भी तो बता रहा होता है। It is access 34 bytes। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ आ जाएगा 16 bytes से ऊपर गया, इसका मतलब ये है कि it's not suitable for us। um, let's do this, let me see अगर ये हमारे पास साइज में है। it has to be, this is 31 bytes, it has to be less than 16 bytes। ऐसे तो हमें okay, this can be, and download the sample। let's download the sample and see।
Now let's upload this file and see the analysis of this file. अच्छा मैं आयरन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ because there are many companies which do not have sandbox environment and so SOC analysts have to go through the open source tools that they have. Okay, let's see. Okay, this is running good. A file named Microsoft.exe. Good. Storage environment values. Okay, so it's not about malware analysis only. There are sometimes that SOC analysts receive a request to, let's say, analyze a software or an application. In that way as well, what we do is we go through the any-run process. So let's say that a new team requires a new extension, what we have to do is we have to check the functionalities of that extension from any run itself. ठीक है इस तरह भी होता है हमारे पास तो जरूरी नहीं है it's not necessary that we only analyze the malware received or suspicious files, but we also analyze the process samples that are received or that is new to the environment. We see the behavior of the process and then we decide if we are allowing that software or not. So GRC is always referring to the Security Operations Center and asking for them to check the behavior or check the signature or the reputation of the process and then proceed to whitelisting the application or software. So you see how many connections this is doing, and you see how many threads that we have through Microsoft.exe, right? So you see there is nothing on the Windows. If you see on the Windows, nothing is happening. Everything is smooth, right? That's it. Key user. Okay, so I need to go here, not here, this PC, and it says user admin app data. Okay. See, and then users. The users and admin, and then app data, and then it says local temp. Okay, it says local, and then it says temp, and under temp we need to find. I cannot see that.
And the temp we need to find TMP54A9. I don't think so. We will be able to find it because such processes are always hidden. Let's see. Damn, you see, there is a file. This is a bad file. Okay. The time has finished. Time has finished. The time has finished. Oh. Anyways, no problem. So now we have this bad file is a malicious file. What it does is it uses timeout.exe to delay execution. Then it starts cmp.exe for command execution. What command is it being executed? This is the command that is being executed. Now we need to analyze the bat file because then we can see what kind of um, what kind of modifications that this file is doing and intended what is the intended behavior of the file. You see, these are all the modules that was loaded during the execution of cmd.exe. And cmd.exe was executed through a process, not by the user itself. See, all the registry keys are okay. There are no registry keys. It is 49. Synchronizations. See the synchronizations that happened, and also see the other processes as well. So this is using timeout.exe. If you click on timeout, then we have different modules and different files. Let's say we click on this. Right, TeamViewer. And what does TeamViewer do? Who can tell me what does TeamViewer do? What does TeamViewer do? What is Shims? Shim cache. What is Shim cache? Shim cache. Shim cache. I have इसको मैंने ना जिक्र किया था लास्ट टाइम भी लास्ट सेशन में नॉट लास्ट सेशन 2 weeks ago. ठीक है उसमें मैंने बताया था कि शिम कैशे एंड एम कैशे क्या होता है. So this guy is doing a shim viewer. It's checking all the executed files and the modified files during the timestamp, the decided timestamp. You see the modules, we have different modules that was loaded, and also within the modules we have some. So all these system32, but this is native image, means that it's trying to corrupt the operating system itself. The cron host.exe was also executed when cmd.exe was executed. So every process has different file, but msh, just leave msh because this search this the C directory. So that does not has to do anything with the malware that we just saw. And a good thing about anyone, it says that this is malicious activity, and also it will give you all the IOCs as well. And secondly, you can get the sample of it. That is good, but you have to be careful when you're doing it on the company's infrastructure, or when you're connected to the company's infrastructure or the company's sensitive data in it. So these are all IOCs, and remember that you need to verify every IOC before blocking it. So you have to be able to
determine the. So now you do the static analysis, right? Whenever you are done with the dynamic analysis, now again you have to do the static analysis, because now you need to search what is the hash of this file, right? Now you need to do this, and then you need to go to wires total. Let's search this, and something malicious will come up. Okay, and that's how you'll do after you're done with the dynamic analysis. It will tell you that like this process is malicious. Okay, but still you need to do further investigation to determine the indicator of compromise, the rest of the indicator of compromise. And then what you have to do is search through the database that you have, or search through a tool that you have, and look for the suspicious or malicious if it exists in your infrastructure. So, and also, it's not necessary that all IUCs is going to tell you that these are malicious. Some of them are, let's say that some of them are not malicious, but it has to be confirmed by you if it is, let's say that it has a, like let's say that it's microsoft.com or it's digicert.com. So these are, or loginlive.com. So these are okay, wait, no, wait. Okay, this is interesting. Wait. What's happening? It says server info. This is probably server name. Ah, no. Okay. This is nothing. Okay. So if you suspect something, then you have to do this step that I've just performed, right? Because you cannot just determine that if the link has Microsoft.com, then it is not malicious, right? But you have to just do the dynamic analysis again to check if you have received any phishing link as well, or if you received any process that is doing credential harvesting or is downloaded anything suspicious. This is Microsoft.exe. This is the main file of the process which was dropped, and you see the executable file from the user that is run by the CMD process. And if you go further into the details of Microsoft.exe, you can see that I think this was the first file that we have analyzed. Why registry keys does not have any data? 49 तो बता रहे registry key में, but it does not show anything. Synchronizations में आ जाएगा.
नेटवर्क थ्रेड्स में भी कुछ भी नहीं आ रहा, कनेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा, एंड देन मॉड्यूल में भी कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मॉड्यूल में आ रहा होगा। Page. See how many registry keys we have, but still it's showing us two registry keys. और notepad.exe, बिकॉज मैंने लास्ट में खोला था और मैंने देखना था notepad.exe में है क्या, अगर हम लोग कोड को रीड कर सकते हो, बट हमारे पास वो खुला नहीं। Anyways, so you have to get into the process. There is a tool called Process Hacker as well. मेरे पास डाउनलोड तो नहीं होगा Process Hacker, probably Process Hacker के लिए um, जैसे इमेजिंग टूल हो गया, ये हो गया, सॉर्टर्स, अरे यार, इधर रॉ और एनकेएस फाइल, इसमें ना रॉ और एनकेएस फाइल लगती है, और ये जो है ना आपके पास एफपीके इमेजर वगैरह से लेनी पड़ती है, और फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो है ना ऑटोप्सी मालवेयर एनालिसिस के लिए यूज नहीं होता। हमारे पास मालवेयर एनालिसिस के लिए काली टू कालालिक्स प्रोसेस हैकर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बट लेट्स सी क्या बोलता है। यार विक्टरा पावर टू
have used a GUI of this tool. रुको. Just a minute, guys. Okay. And then home only downloads. And then we do string, सारे strings आ गए इसके मतलब TXT के. So we cannot just I never used my yeah for my analysis together. Okay, animals is for okay. So 11 को हम लोग जो है ना अगले सेक्शन में भी रख सकते हैं. थोड़ा सा मैं 11 को देख लीजिए हम लोग 11 के पर एनालिसिस कैसे कर रहे हैं. So um let's do the challenge together and हमारे पास चैलेंज है .txt right देखो this one. So अब इसके अंदर जो है ना ये देखो टोकन भी दिया हुआ है उसने टेलीग्राम का वो भी दिया हुआ है यूआरएल भी दिया हुआ है एंड सेंड द मैसेज टू दिस आईडी यू सी. सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था उस पे एनीरन पे अकाउंट बनाने के लिए, और लेकिन इशू ये आ रहा है कि वो ईमेल लगा रहा हूँ लेकिन वो वाली कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा. कहाँ पे ऐप ये जो आपने बताया था एनीरन, एनीरन पे वो बिजनेस ईमेल मांग रहा है. बिजनेस पे सर पर जो बेशक उन्होंने बाई किया है या नहीं तभी चल जाएगी. अब मुझे एरर का वो भेजो एरर क्या आ रहा है आपके सर पास कोड ही नहीं आ रहा. जी सर, जब साइन अप पे जाता हूँ ना डिफरेंट ट्राई किया, मेरे पास जीमेल था और दूसरे तो वो ओपन नहीं हो रही उससे, जीमेल से भी और बाकी से भी. नहीं जीमेल से नहीं होगा यू हैव टू पुट बिजनेस आईडी बिजनेस ईमेल आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. जीमेल आउटलुक वगैरह से कभी नहीं देगा ये एक्सेस ही नहीं देता ये मसला ही है इसका एनीरन का ना. तो सर ये अगर ले भी लेते हैं तो ये कोई इश्यू तो नहीं है, यानी एक ही अगर, क्योंकि वो फिर आपको पता है ऑफिस मेल एक ही हमारे पास होती है तो उस पे बना लें, वो मल्टीपल मशीनें टेस्ट होती रहेंगी, कोई इश्यू नहीं आता फ्री में या
लिमिटेड हो अगर गया बस कोशिश करना कि आप सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अपलोड नहीं करो, वरना वरना कोई इशू नहीं है, आप यूज कर सकते हो। मैं अपने पुराने ऑर्गेनाइजेशन में था तो मैं जो है ना, और करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैंने जो है ऑफिशियल ईमेल यूज किया हुआ है। ठीक ठीक, क्योंकि मैंने सारी हाँ, बिकॉज मुझे तकरीबन बहुत इशू फेस हुआ था उसके ऊपर, जब मैं अपना पर्सनल ईमेल यूज करने की कोशिश कर रहा था। बिकॉज मैं बोला था कि पर्सनल ईमेल, क्योंकि पर्सनल ईमेल तो अपने पास ही रहता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल जब आपने जॉब छोड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल खत्म हो जाता है। तो मैंने बहुत कोशिश की थी उस टाइम पे और कुछ फायदा नहीं हुआ था। मुझे फिर भी जो है ना अपना इसी का ईमेल यूज करना पड़ा था, कॉर्पोरेट ईमेल यूज करना पड़ा। से थैंक यू सो मच सर। बस वही इशू था, वो स्टक था वहाँ, तो उसके मैंने कहा पूछ लेता हूँ। हाँ, अपना क्योंकि काफी कॉर्पोरेट ईमेल यूज कर लो, और अगर फिर भी कोई कुछ मसला होता है ना, मैं बैठा हूँ उधर, बता देना। सही सर, थैंक यू सो अच्छा, मच ये सर। टूल अच्छी चीज है, लेकिन ये है कि सैंड बॉक्स टूल वगैरह भी आते हैं यार, बहुत पेड वर्जन भी है, और एनीरन का भी पेड वर्जन है बाय द वे। एनीरन भी पेड वर्जन देता है, उसके अंदर क्या होता है, फिर आपका जितना भी डेटा है ना, वो ये बोलता है कि हम आपका डेटा फिर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। खैर, वो रेपुटेशन वगैरह तो फिर भी उठा लेता है ना एक डेटा से। अच्छा अच्छा, चलिए कॉर्पोरेट हाँ, वाला मैं देखता हूँ सर, फ्री में कोई मिलता होगा वो ऐड करके फ्री फिर वाला ले उसके लो, बाद अभी पेड वाला खुद से अपनी जेब से देने की क्या जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को पे करने दो। बिल्कुल। जी जी हाँ, सर, दैट ऐसे इज ही। बेटर। अगर अनलेस अगर आपके पास अपनी कंपनी चला रहे हो और आपके पास क्लाइंट है, तो फिर चलो समझ आता है। फिर इससे अच्छे सोल्यूशन है आपके पास, लिनक्स पे आप पूरा सैंडबॉक्स बना सकते हो, या आप विंडोज मशीन पे पूरा एक सैंडबॉक्स बना सकते हो। फ्लेयर वीएम के नाम से एक बड़ा अच्छा वो आता है। फ्लेयर वीएम के अंदर जो है ना सारे रिक्वायर्ड टूल होते हैं। मेरी ये वाली मशीन जो है ना सपोर्ट नहीं कर पाएगी, अगर मैं दो वीएम एक साथ ऑन करूंगा ना, मेरी मेमोरी खत्म हो जाएगी, लाइक मेमोरी डेड हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे नहीं यूज कर सकता। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना, मेरे पास दूसरी मशीन है, उसके अंदर जो है ना मैं फ्लेयर वीएम आप लोग को इंशाल्लाह सेशन में टाइम मिला ना, मैं आप लोग को फ्लेयर वीएम यूज करके दिखाऊंगा। उसके अंदर बड़े अच्छे टूल्स हैं, उसके अंदर मालवेयर एनालिसिस बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा अच्छा, सही सर। और अच्छा, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ साथ अगर इसका सबमिशन करनी है कर सकते हो, वरना यू गाइस कैन जस्ट कीप विथ मी, और हम लोग इसके थ्रू जाते रहते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? सर वैसे वो आपका ये तो भी देख लेते हैं। वैसे आपने जो प्रीवियस टास्क दिए थे उसमें क्रिप्टो, वो ब्राउजर माइनर वाला जो था, तो ब्राउजर वाला था ना, ब्राउजर वाला हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, जी पहले जी वाले सर, में वो कर कर लेंगे। लिया था। वो जस्ट एक रह गया था, अभी क्लास थी, वरना वो भी रिजॉल्व कर लेते। एक उसका क्वेश्चन रह गया था। आपने कर लिया था, आप बोल रहे हैं? जी जी। जी जी सर, अच्छा, वो कर माशाल्लाह, लिया था। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो अभी यही था सर, फिर ये कर लेता हूँ जैसे आप कहते हैं, अभी देख लेते हाँ, माल अगर आपने वो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और कल फिर अगर हम कोई पॉइंट मिस करते हैं तो फिर आप हमें बता दीजिएगा। राइट, अगर हैं। मैं कुछ जी जी। ऐसा कुछ चीज मिस कर देता हूँ, बिकॉज आपने ऑलरेडी कर लिया ना, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। जी जी सर, उसका एक ही क्वेश्चन रहता है मेरा, वो कंप्लीट करता हूँ तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, सही हो गया, सही हो गया, हम लोग इंशाल्लाह उसको कल कर लेते हैं। सही है सर। तो ये वाला है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द malicious IP address referenced multiple times in the script? So this is a script। ठीक है, ये एक स्क्रिप्ट है, राइट? See, this is giving the path file, this is giving the user, the new user's password, and then installing something, yum install OpenSSL, and then you see installing curl, and then installing a wget. So who's familiar with the Linux machine will understand कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सबसे पहले पूछा है, देखो यहाँ पे एक आईपी मिला 185.141.25.168। यहाँ पर भी वही सेम आईपी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास सवाल ये है कि व्हाट इज द malicious IP address referenced multiple times in the script? तो here it's mentioned, and then again it's mentioned here, and then if you go down, it's mentioned again 25168, 25168. Right, so 25168, see, wget 25168. So we'll do one by one. So the first answer of the first question is 185. This is the this is the IP address that was and remember, this is an easy difficulty. Okay,
So the script uses apt get to retrieve two tools and uses yum to install them. What is the command line to remove the yum logs afterward? So, okay, it uses two tools. Two tools means this is the command line because see, this is remove rm is used for removing, and then it's removing the whole sort of directory because जो भी होगा इसके अंदर it will be removed. It's installing two tools. It says two tools. Two tools. Wait. It says two tools. Apt get to retrieve two tools. So अगर हम लोग स्क्रिप्ट को देखें two tools apt get and then the first one is OpenSSL and then yum install OpenSSL. But if you see here, it has cur and then wget. OpenSSL and cur maybe. Let's see. ठीक है, continue करते हैं. Probably this is the command line that okay, this is the command line that was used to remove the logs after it was downloaded. A message is created in the file etc motd dot. What are the three first words? Okay, okay, no, not this one. We have start downloading bot. So there is a bot being downloaded और फिर उसके बाद उसको full permission भी मिली execution की. supermicro_bt and then bash.sh भी हो रहा है. What does this command do? ये यहाँ पर इसके पास एक फाइल पड़ी हुई है bash.sh के नाम पे, इसके होस्ट पे C2 सर्वर के पास अटैकर के पास एक फाइल पड़ी हुई है. -o is used for -o is used for the output of the file. ठीक है, जब वो आउटपुट करेगा, जब ये फाइल आएगी तो कौन से उसमें होगी, तो उसने पहले ही डायरेक्टरी दे दी एंड देन द नेम दे दिया, राइट. फिर उसके बाद उसने बोला कि इन द सेम कमांड ही इज डूइंग cd टू द temp फोल्डर एंड देन ही इज डूइंग he is again okay. So once he did the cd, the one he is in the directory of the temp folder, then he is doing chmod plus x. Chmod plus x is used to modify the permission of the executions or permission of the files. Okay, he is giving the permission of execution to bash.sh and afterwards it is running the file. So the bash file can be run by dot and then backslash और फिर जो है ना ये रन हो जाती है. ठीक है, continuing then send message done user change. यहाँ पर जो है ना ये होस्ट नेम भेज रहा है उसको पीछे अपने जो भी है अटैकर है. ठीक है, शैडो के अंदर आपके पास पासवर्ड आ जाते हैं, डिफॉल्ट यूजर, ये सारे देखो ये ग्रैब कर रहा है. ठीक है, यूजर मोड है और कोई शेल है या नहीं है, राइट. एंड देन ही इज डूइंग हु एम आई. ठीक है, एंड देन ही इज किलिंग द प्रोसेस एज वेल. डन. और फिर उसके बाद मैसेज क्रिएट करता है कि यू आर हैक. ठीक है, तो दिस इज प्रोबेबली द मैसेज. सी MOTD cat etc MOTD EOF. अच्छा, इसमें जो है ना, देखो इसमें जो है ना स्क्रिप्ट के अंदर एक फाइल क्रिएट कर दी है. एक मिनट, मेरे पास ना अजान हो रही है, एक मिनट.
Okay, continuing. So the the message that was, am I audible to you all? Yes, sir. Okay. Okay. Okay, so the message, it says the message created in the file etc motd. What are the the three first words? So based on this, he did cat, and it says you were hacked. You were hacked. So this message also contains a contact email address to have the system fixed. What is it? So if if we have gone through this three times already, okay, so it is giving us the contact us on mail, which is national science protonmail.com. It's sort of Chinese. So if you, okay, so it needs the whole email address. This is the email address the of the message. Okay, when files are encrypted, an unusual file extension is used. What is it? So whenever attackers create files that is encrypted in an encrypted format, they they never use a known format. Like they will never use .pdf, they'll never use .txt. They will always use a, a an anomalous format. So in here we have to find that we have to find that encrypt home file started. So probably here done grep b10 file open SSL. Okay, out. Okay, this is the extension. Look at the extension, man. Salim logo. Look at the extension. So this guy using this extension open SSL encryption, and this guy using 256 encryption, and it's using a salt with it, and then it's giving you this. Okay, let's try this. Right. There are 5 functions associated with the encryption process that start with encrypt. Whether they, in order are actually executed in the script, do not include. Okay, it gave us a hint of. Okay, so it says that 5, right? So the first one probably grab files, home, separate. Encrypt home, encrypt root, and encrypt DB.
let's start from the beginning. Encrypt grep files. Rep underscore files, and then home and root DBA. ठीक है, root, home, root and DB. 1, 2, 3, 4. This is 4. This is 4. Okay, SSH भी है, ठीक है. Okay. Function 1, function 2. Okay, this is how I did it. Start with encrypt. So I think तो पूरा देना पड़ेगा. कॉपी कर लेते हैं. पहले वाले का थोड़ा सा इशू है. ग्रेप फाइल्स किस तरह होगा? अच्छा ठीक है, सेव. Oh, this is also wrong. Maybe I'm looking at the wrong one. It says 5 functions associated with encryption that start with encrypt. What are they? In the order they're actually executed in the script. Okay, so here it is. This is the order. See? This is the order. Yes, this was the order. So it says in the order actually executed in the script. Good. Create user change, encrypt SSH, encrypt grep files, home, root, DB. And if you look at the encrypt grep files for ID in dollar ID, message, send message ID, hosted, encrypt plus files start. तो ये सब कुछ encrypt करता हुआ जा रहा है. You see? It is encrypting all the files, and it's also encrypting root. It's grabbing root and then same encryption 256 salt, और फिर उसके बाद out file हमें ये दे रहा है and out file हमें ये दे रहा है. ठीक है. The last question, this script will check a text file hosted on the C2 server. What is the full URL of this file? Probably यहाँ पे हमारे पास नीचे एक ये थी, right? और हमारे पास question है, this script will check a text file hosted on the C2 server. What is the full URL? wget he is again connecting to that server. फिर उसके बाद वो जो है इस फाइल को गेट कर रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर रिमूव भी कर रहा है. वो क्रिप्टो जो उसने जो की क्रिएट की वो रिमूव भी कर रहा है. Okay, so this was an easy one. Okay, you can read the script, you can understand what's happening in whenever this executed. Okay.
He is giving the contact where you can chat as well. डिस्क्रिप्शन भी की हुई है सुपर माइक्रो सीआर। फिर उसके बाद उसमें प्रोटॉन मेल भी दिया हुआ है। प्रोटॉन मेल में ये होता है कि यू आर नॉट ट्रेसेबल, राइट? ओके, सो that's it for today. I hope that you guys learned something, and if you guys need anything, if you have any questions, just let me know. ठीक है बिलाल, आपको अगर कोई भी सवाल हो you can ask. इंशाल्लाह ज़रूर। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है सर, वो देख रहा था, माशाल्लाह आपने सब अच्छा समझाया, तो वो कवर हो गया बस। तो वो मैं एक दफ़ा खुद भी ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ उसके बाद, और फिर मैं इंशाल्लाह करने की कोशिश। अच्छा, वैसे ये जो है ना बहुत इजी है, हम लोग जी जी स्टेप सर, बाय वो स्टेप जाते हैं ना तो हार्ड हो जाता है। सर ये जस्ट कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है इसमें। ये लैंग्वेज है तो इजी टू रीड, ये जिसमें पाइथन पढ़ी है उसको भी समझ आ जाएगी, या लेकिन ये वाली लैंग्वेज देखना ये पड़ेगा। बैश 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 प्रोग्रामिंग है। बैश प्रोग्रामिंग, तभी 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 क्योंकि सिमिलर हाँ है और इजी टू रीड है और सब कुछ है, तो तभी। हाँ, ये अपना लिनक्स के ऊपर जितनी भी, मतलब अगर आप इसको लिनक्स के ऊपर ड्रॉप कर दो ना, बिल्कुल सर, आप बैश इससे का फाइल बेसिक बना के पढ़ी कर थी, दो। बेसिक पढ़ी सॉरी। थी, लेकिन बेसिक पढ़ी थी लेकिन याद नहीं था अभी। वो बिल्कुल आपकी बात बजाय, वो ऊपर लिखा हुआ बिन बैश और उसका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन का वजह से ऐसे ही है। हाँ, फिर ये एग्जीक्यूटेबल भी बन जाती है। ठीक 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 ठीक, ऐसे ही है सर। तो ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ सर, ये भी और दूसरी भी देखता हूँ, तो इंशाल्लाह वो दूसरी लैब थी वो भी मैं देखता हूँ होता है जैसे। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आपको इंशाल्लाह जरूर पूछना है इंशाल्लाह। चले ठीक है बिलाल, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू थैंक यू फॉर सो मच सर। टेकिंग द क्लास एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, और कल इंशाल्लाह वो ब्राउजर वाला करते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके ब्रदर, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।